अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो है दैट इज़ समथिंग विच इज़ माय पर्सनल फेवरेट, क्योंकि इट्स समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट और अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिक्वेस्टेड मी टू डू अ वीडियो ऑन दिस. It's to do with my journey for getting Chevening scholarship and admission in the London School of Economics and Political Science to study Masters of Laws. तो सबसे पहले तो I'll talk about Chevening scholarship. It is a scholarship funded by the UK government and I would say it's a jackpot क्योंकि सब कुछ covered होता है. Accommodation fees, tuition fees, यहाँ तक कि tuberculosis के लिए जो मेरी फ़ीस गई थी for applying for visa, टिकट्स कवर्ड थे एंड इनफैक्ट मैंने 2000 पाउंड विच इज़ अ प्रीटी बिग अमाउंट सेविंग करके मैं वापस ले आई थी. सो यू कैन अंडरस्टैंड के माशाल्लाह इट वाज सच अ big scholarship that gave me a lot of monetary help as well as of course because it is a very prestigious scholarship. So even now when I attend events and they are to do with alumni events, so people are more excited to know how did I get Chevening scholarship as opposed to getting admission in LSE. So back in 2014 जब मैंने graduate किया था from London School of Economics and Political Science, so at that time I thought कि wow, I've studied from LSE so people will recognize me as LSE graduate. लेकिन जब मुझे Chevening scholarship मिली तो this took over everything. So I became recognized as a Chevening scholar. So just a disclaimer, I have my entire application in front of me with all the questions that were asked and I have the answers as well. But let me tell you कि इस वीडियो का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि I will be sharing my answers to encourage people to adopt exactly what I have written. You will never be able to talk about your answers in the application in the interview if you copy paste from somebody else. So the idea of the Chevening scholarship is to basically encourage people to study in UK to take benefit of its culture experience and then to come back to Pakistan to make a difference in Pakistani people's lives, in Pakistan in general. तो अगर आप लोग ये सोच के अप्लाई कर रहे हैं कि you will not come back to Pakistan, then that's not allowed. So let's get started with the application. The first part of the application is to do with personal details, contact details. आपने कहाँ से जो है education, your prior education. Mine was from London School of Economics, so I included that. And then questions like, do you have any postgraduate qualifications, which I didn't. Then there was an entire section on work experience. अच्छा, work experience में it's clearly mentioned over here that this award category requires you to have at least 2 years work experience. At the time of submitting your application, work experience may include relevant full-time, part-time, voluntary and internship positions. तो मेरा जो एक्सपीरियंस था दैट एक्सीडेड 2 years क्योंकि आई केम बैक इन 2014 और ये स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था 2016 में. Though I had done a lot of part-time work when I was studying in LSE, when I was doing my undergraduate program, तो फिर मैं वापस आई तो I did a lot of voluntary work as well. तो सब कुछ मिला के it definitely exceeded 2 years. So it's not necessary कि अगर आप apply करना चाह रहे हैं and you do not have like a full-time job, then that wouldn't count as work experience. That will definitely make you eligible provided that your total work experience is of at least 2 years. Then previous employment. So previous employment I mentioned everything from my experience as a lawyer. Then I had also worked in Express Tribune as sub-editor, so I included that as well. And then your choice of universities. So I chose LSE of course because I love it. And then my second choice was UCL and I got an offer from UCL, so I still have it. It's the conditional offer from UCL. And LSE of course I got the offer and I ended up studying there. Then my third choice was King's College and I got an offer from there as well. So always make sure that your choice of universities is such that if you, God forbid, do not get admission in the first choice of your university, then you at least end up getting an offer from, let's suppose, the third university. तो आप कोशिश ये करें कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा tough competition है, if I talk about in my case, definitely LSE का सबसे ज़्यादा tough competition था as opposed to UCL and King's.
फिर मेरा एक ये भी फ़ायदा था बिकॉज़ आई हैड ऑलरेडी स्टडीड फ्रॉम LSE, तो ये थोड़ा सा मुझे आई थिंक एडवांटेज मिला होगा बिकॉज़ ऑब्वियसली आई वाज फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट एंड I would have been able to adjust much better than as opposed to getting to know a completely different university. Acha, then let's get started with the questions. So the first question was to do with leadership and influence question. So I'll just read it out. Chevening is looking for individuals that will be future leaders or influencers in their home countries. Explain how you meet this requirement using clear examples of your own leadership and influencing skills to support your answer. अच्छा, इसमें बिकॉज लाइक आई सेड आई एम अ लॉयर, तो मैंने जो भी लिखा था दैट वाज कनेक्टेड टू माय एक्सपीरियंस. तो मिसाल के तौर पे मैंने लिखा कि जो है ना, आई रेगुलरली फाइल प्रो बोनो केसेस एंड विच आई हैड, मैंने जो है डिवोर्स केसेस किए, खुला के केसेस किए, सक्सेशन मैटर किया. तो ये सारे वो मैटर्स थे जिसमें आई डिड नॉट चार्ज एनी थिंग एंड आई जस्ट लाइक हेल्पिंग पीपल इन जनरल एंड through litigation I got the opportunity to help people in a bigger capacity, so I wrote about that. And then like I said, I worked as a sub editor in Express Tribune. तो मैंने Express Tribune की जो मैगज़ीन है उसके लिए काफ़ी बेशुमार आर्टिकल्स लिखे ऑन ह्यूमन राइट्स इशूज़, और वो पब्लिश्ड आर्टिकल्स थे, सो आई कुड गिव द रेफरेंस ऑफ द डेट व्हेन दे वर पब्लिश्ड सो दैट इन द इवेंट दे वांट टू चेक, इट्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. फिर उसके बाद मैंने वॉल्ट्री एक्सपीरियंस का लिखा एंड एट दैट टाइम आई यूज़ टू वॉलंटियर एट कारवाने हयात विच इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटल हेल्थ केयर. तो वहाँ पे मैं रेगुलरली जाती थी एंड आई यूज़ टू हैव अ वेरी गुड टाइम टॉकिंग टू पीपल ओवर देयर एंड participate in their events. So बड़े colorful activities होती थी, so I really used to enjoy being around them. And you realize कि आप कितने privileged हैं to be able to living and in your home and around the very sheltered environment. So you develop a lot of empathy, so that's what I wrote about. So then I gave an example कि जब I was working at the law firm in the litigation department, तो I wrote about this initiative that I took, जिसमें मैंने अपने बॉस को कहा कि what we should have 15-minute sessions every week in which there should be a presentation on judgments, anything which is related to the practice of the law firm. तो हम लोग क्या करते थे कि उस presentation में there used to be rotation from one associate to another. We used to pick a judgment और उसके ऊपर हम लोग deep एनालिसिस करते थे, उसके बारे में बात करते थे, उसको क्रिटिकली एनालाइज करते थे. फिर माई इनिशिएटिव वाज आल्सो टू हेल्प पीपल फ्रॉम अदर लॉ फर्म्स एज वेल. तो जो भी नोट्स वगैरह हम लोग लेते थे, द शॉर्ट प्रेजेंटेशन जो होती थी, आई हैड मेड अ लिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर लॉ फर्म्स और उनको फिर मैं सर्कुलेट करती थी. सो दिस इज़ समथिंग विच रियली made me I think communicate better as well to other people, because I not only gave presentations to my boss and other colleagues but also used to make detailed notes as well. So this is something which I wrote in my application कि it was applauded and a lot of people appreciated my effort. तो आप इस question में अपने किसी initiative के बारे में बात करें, something which you did in a position of a leader. तो I led this initiative, I was in charge of it. तो इसलिए I wrote about it. And then comes the networking question. So I'll read this as well. Chevening is looking for individuals with strong networking skills who will engage with the Chevening community and influence and lead others in their chosen profession. Explain how you meet this requirement using clear examples of your networking skills and outline how you hope to use these skills in the future. तो इसकी मिनिमम वर्ड लेंथ है 50 वर्ड्स, मैक्सिमम है 500 वर्ड्स. तो इसमें मैंने लिखा कि बिकॉज आई ऑलरेडी स्टडीड इन लंदन, तो आई गॉट टू have a lot of friends whom I made groups with, or I was a student mentor, peer supporter thi, so I connected with a lot more students from different degree programs, and I used to basically help people and talk about their issues. So I was given training as a peer supporter. तो आई रोट कि भाई बिकॉज आई पार्टिसिपेटेड इन द एलुमनाई इवेंट्स, और जब मैं वापस आई पाकिस्तान आई वाज स्टिल वेरी मच कनेक्टेड. तो आई रोट अबाउट द फैक्ट दैट व्हेन आई गो बैक आई अगेन कनेक्ट विद देम, एंड आई विल ऑल्सो स्प्रेड
अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड हाउ दे आर डेल्ट विद इन पाकिस्तान. तो इस तरह से मैंने नेटवर्किंग के बारे में लिखा. एंड देन आई ऑल्सो रोट अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू नॉर्दर्न एरियाज़, जहाँ पे मैं फिर डोनेशंस देती थी. एंड आई यूज़ टू हेल्प पीपल इन ड्राउट अफेक्टेड एरियाज़. तो वहाँ पे जो है बिकॉज आई मेड डोनेशंस एंड स्टफ, तो मैं यहाँ पे NGOs वगैरह के साथ जो है कनेक्टेड हूँ. सो बिकॉज माई एम at the time was to do human rights, and I'll tell you towards the end of the video what actually happened. तो I wrote about this. उसके बाद studying in the UK question के studying in the UK question के why are you choosing the universities. तो मैंने LSE के बारे में लिखा. अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है ना, यू नीड टू राइट कि भाई ऐसा क्या है LSE में जो UCL में नहीं है या जो किंग्स में नहीं है, कौन से कोर्सेज़ में आप इंटरेस्टेड हैं और क्या वो कोर्सेज़ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हैं, क्या वो प्रोफेसर जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं उन प्रोफेसर्स की ऐसी क्या प्रोफाइल है जिसकी वजह से यू हैव अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. सो आप एक कोई जनरल सा आंसर नहीं लिखें कि दैट यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन लंदन एंड यू नो वी रियली लाइक लंदन लाइफ. नो, यू नीड टू राइट अबाउट द यूनिवर्सिटी. अच्छा, उसके बाद करियर प्लान क्वेश्चन, दैट्स द लास्ट मेजर क्वेश्चन. इसमें ये है कि Chevening is looking for individuals who have a clear post-study career plan. Please outline your immediate plans upon returning home and your longer-term career goals. तो इसमें मैंने लिखा कि जब मैं वापस आऊँगी तो आई वांट टू बिकम फ़ीमेल जज. तो मैंने लिखा कि एट दैट टाइम जो है कोई सुप्रीम कोर्ट फीमेल जज नहीं था. आई रोट अबाउट दैट. फिर मैंने लिखा कि I wrote about the fact that I want to assist victims of sexual assault and rape in Pakistan, and my aim is to seek improvement of human rights laws in Pakistan. तो वो मैंने बड़ा कनेक्ट किया कि किस तरह से जो मेरी तालीम है UK की वो मुझे बेनिफिट करेगी in order to achieve these goals. So this is all about the Chevening scholarship. Briefly, I'll also talk about my personal statement that I wrote for LSE. In my personal statement, I'll just open it on my laptop, and that again is very individual. आप पर्सनल स्टेटमेंट में जेनेरिक चीज़ें नहीं बता रहे होते हैं कि ओ आई एम अ बिग अचीवर एंड आई गॉट स्ट्रेट एज, या फिर I secured 2-1 degree in undergraduate, so that's a big deal to score upper second class honors and I deserve the admission masters. No, you need to write about the fact that what makes you stand out. देखें, a lot of people will be applying, like the number of applications that LSE receives is unimaginable. ठीक है. There's a friend of mine, उसने अप्लाई किया था LSE में, and even though he's a barrister, he had done bar at law, he didn't get in, I got in. Or in fact, I think even in terms of the upper second class honors, he had a much higher percentage. Regardless, I got admission in LSE, and I'll tell you how I got it. जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ था वो मैंने बड़ी पंची लाइन से जो है ना स्टार्ट किया था, and I wrote about something which was very personal, something which developed a lot of resilience in me. It was something that affected me so profoundly that my whole life changed since then. And then I wrote about my coping skills, how did I get out of it and how did I manage to basically continue be the way that I was prior to that. And in fact, how that made me a person who can now understand other people much better. तो वो मैंने relate किया कि भाई, because I went through those tough circumstances, and those tough circumstances were actually in London only, और वो those circumstances did not affect me in any sort of a manner, in the sense कि I did a lot better actually after having faced those, क्योंकि it made me a very strong person. तो ये ऐसी चीज़ है कि you can't make it up, क्योंकि इंटरव्यू में पूरा इंटरव्यू जो है वो आपके इस एप्लीकेशन के ऊपर उसका दारोमदार होता है. So if you say anything which is not there in the application, or let's suppose, of course I spoke a little more in the interview as opposed to strictly adhering to whatever I've mentioned in the application, लेकिन it has to be connected. और जितने कॉन्फिडेंस से मैं अभी आप लोगों के सामने बोल रही हूँ उससे कई ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मैंने इंटरव्यू में बोला था, बिकॉज माई मेमोरी वॉज फ्रेश इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई हैड रिटन इन द एप्लीकेशन. तो पर्सनल स्टेटमेंट में कमिंग बैक टू इट,
you have to talk about something which draws the mind of the reader instantly. कि मैं पहला पैराग्राफ पढ़ूँ, क्योंकि इतनी एप्लीकेशंस होती हैं, इतनी पर्सनल स्टेटमेंट्स होते हैं. थिंक अबाउट इट, इफ़ यू रीडिंग 100 पर्सनल स्टेटमेंट्स एट अ टाइम और आपके पहले ही पैराग्राफ में जो है वो एक जेनेरिक सी चीज़ मैंशनड है, यू वुडंट बी एबल टू हैव द अटेंशन ऑफ द रीडर टिल द एंड ऑफ द पर्सनल स्टेटमेंट. तो उसके बाद फिर मैंने पर्सनल स्टेटमेंट में अपने 2 कोर्सेज़ के बारे में लिखा कि जो है ना, LSE में वाई हैव आई अप्लाइड फॉर मास्टर्स ऑफ लॉ विद स्पेशलिज्म इन ह्यूमन राइट्स. अच्छा, LSE में मैंने बाय द वे 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया था, MSc इन ह्यूमन राइट्स और LLM विद स्पेशलिज्म इन ह्यूमन राइट्स. मेरा दोनों में हो गया था, तो आई एंडेड अप चूजिंग LLM. तो उसके बाद फिर व्हेन आई रोट अ लॉट इन टर्म्स ऑफ कि मैंने LSE से जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ली थी उसको मैंने फिर किस तरह से उसके साथ फ़ायदा उठाया और किस तरह से LSE ने मुझे हेल्प किया. देर आर अ नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़. आई मीन, आई एम नॉट प्रोमोटिंग LSE ओवर हियर, लेकिन द फैक्ट दैट आई चोज़ LSE फॉर द सेकेंड टाइम स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द फैक्ट हाउ हैप्पी आई वॉज फ्रॉम LSE. तो आई रोट अबाउट माई वर्क एक्सपीरियंस, फिर मैंने अपना वॉलंटरी एक्सपीरियंस के बारे में लिखा. एंड देन माई लास्ट पैराग्राफ वॉज टू डू विद अ पंच लाइन कि मेरा एम्बिशन क्या है, व्हाट इज़ माई एंड गोल, मैं क्या करना चाहती हूँ इस डिग्री से, क्यों वो मेरे ऊपर जो है इतनी hefty amount. LSE ने 20% ऑफ माई स्कॉलरशिप वॉज एक्चुअली फंडेड बाई LSE. बाकी की जो रिमेनिंग थी दैट वाज फंडेड बाय द UK गवर्नमेंट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई यूनिवर्सिटी अगर आपको इतने पैसे दे रही है, सो इट शुड बी कॉन्फिडेंट कि आप पे लगाई हुई इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी. सो that's about my overall application of Chevening scholarship and my personal statement. And in the end I would just like to say कि आपकी एप्लीकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, जब मैं इंटरव्यू के लिए गई एंड दे आस्क्ड अबाउट माय आंसर्स एंड एवरीथिंग, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी एंड एट द सेम टाइम आई रियली इंगेज्ड देम. मैंने अपने बिल्कुल लाइफ खोल के रख दी थी. एंड दैट्स बिकॉज वो एस्पेक्ट्स थे मेरी ज़िंदगी के जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे, इन द सेंस कि अगर मैं उन सर्कमस्टांसेस से नहीं गुज़रती तो शायद मैं इतना आगे नहीं जाती. मुझे कोई इट वॉज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर मी, इट नेवर हैज़ बिन. तो आई टोल्ड देम कि आई हैव फेस्ड सम ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, और किस तरह से उन सर्कमस्टांसेस ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आई मैनेज टू सिक्योर scholarship in the sense that when I applied for LSE, तो naturally when you're writing in your personal statement things like that, तो आप अपनी achievements के बारे में लिखते हैं कि भाई आपने like for instance I got an offer from one of the best law firms in Pakistan जहाँ पे मैंने सबसे पहले काम किया था. So write about those achievements and stuff which makes the reader feel कि yes you stand out from the rest of the applications. So hope you guys enjoyed the video, and let me know if you have any questions, any comments, and I'll be more than happy to guide you. But please do not ask me to email you my application, email you my answers. I have been asked so many times from so many people, and I'm tired of telling them that look, it has to be very, very personal. It cannot be a copy paste. On that note, whoever is watching the video and intends on applying for the scholarship, wish you all the best, and thank you for watching the video. If you liked the video, then please subscribe to my channel. Thank you.